देवी चामुंडी महिषमर्दिनी अम्मा हरसम्मानी ಎಲ್ಲರ ಸಲಹಮ್ಮ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿ महिषमर्दिनी ಅಮ್ಮ ಹರಸಮ್ಮಾನಿ ಎಲ್ಲರ ಸಲಹಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಮನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಮನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಪೊರೆಯಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಪೊರೆಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿ महिषमर्दिनी ಅಮ್ಮ ಹರಸಮ್ಮಾನಿ ಎಲ್ಲರ ಸಲಹಮ್ಮ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವತೆಯೇ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವತೆಗೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಹೃದಯ ತುಂಬೆ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಹೃದಯ ತುಂಬೆ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿ महिषमर्दिनी ಅಮ್ಮ ಹರಸಮ್ಮಾನಿ ಎಲ್ಲರ ಸಲಹಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಲಹಮ್ಮ. Thanks a lot, Priya, for this wonderful song. Now I request my President, Sachin Sabnis, Agri Tech President, to kindly deliver the welcome address. A very good morning to one and all. Dignitaries on the dais, Sri Kailash Chaudhary ji, Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Sri B.C. Patil ji, Honorable Minister for Agriculture, Government of Karnataka. Dr. M. Angamuthu ji, Chairman, APIDA, Department of Commerce, Government of India. Shri Krish Gopal Krishnan ji, former CEO of Infosys and Chairman of Auxiliary Venture. Madam Shri Devi Singh ji, Director CFTRI. Distinguished members, participants, invitees, all exhibitors who have put up the stall for this expo, and friends from media. A very good morning to all of you. On behalf of Lagutyog Bharati and IMS Foundation, jointly along with CSIR and CFTRI Mysore, may I welcome you all to the distinguished guests out here for the third edition of TechBharat 2022. The three-day third edition of TechBharat 2022 is a conclave cum expo focusing on two important economic sectors, namely agriculture and food technology. The theme, transforming India's food tech, agri tech and the ergonomic landscape. As we all know, the primary source of livelihood for majority of India's population is agriculture. This is the key driving sector in India's economic growth.
Being an agrarian economy, there are more than 60% of farmers who own land less than 1 acre. Hereafter, as they form the larger group base, how we continue to support these small farmers through government being the catalyst in the growth of agriculture sector, including linking small farmers with traders, self-help groups, farmer cooperatives, agri-food processors, community farming, and retailers to the various types of business model and agriculture supply chains. Adopting modern and sustainable technology through Agri Tech initiatives will surely make a difference in the Indian agriculture ecosystem. Integrated platform would require sub-investment across multiple sectors in multiple phases. A holistic digital platform to embrace e-trading and an online marketplace, seamless supply chains, smart farming, database advices on risk and the mitigations of these risks, such as a short-term weather and a long-term soil condition predictions, is the need of the hour. As far as the outcomes are concerned from this conclave, from Expo, it is clear to us that reaching the unreached audiences, enhancing brand equity of Indian organizations, aiming for a larger global market share for Indian agri and food products, enhancing visibility of Indian agri products and its services, access to business opportunities for the farming community, reaching out to the global players and the investors, achieving collaboration in research and academics. Today we are hosting the main event of this third edition covering various topics related to agri and food tech. I am sure several path-breaking deliberations will come forward at the close of 3-day proceedings. Over the next few days from now, we will be listening to some of the domain speakers from these two tracks. Experts from India and abroad, government, central as well as state, industry captains, academic torchbearers, established and aspiring entrepreneurs, trailblazers, influential mentors and motivators will be sharing their valuable thoughts. The thoughts shared in these 3-day conclave conference is being documented. A comprehensive compendium will be submitted to the relevant government authorities thereafter. We sincerely hope the government and other related agencies will take note of these thoughts shared by domain experts and accordingly use them as inputs during policy formation. Before I close, I once again take this opportunity to extend a hearty welcome to all the dignitaries as well as guests, invitees and the exhibitors for this exhibition. Thank you very much. Thanks a lot, sir, for introducing Laghu Bharati and IMS Foundation to the audience, and also listing out various activities that LUBK has been involved in promoting business in the state. Can I now request Srimati Chaya Nanjappa, Vice President, Laghu Bharati, to kindly deliver the theme setting address, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಅದೆಷ್ಟು ಸುಂದರ. ನಮಸ್ತೆ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು. A very warm welcome on this pleasant Thursday morning to the honorable dignitaries present here, and also we heartily welcome all of you who have come from across the country and abroad, even as far as Israel, to Namma Mysuru. Most respected Honorable Shri Kailash Chaudhary ji, our Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri B.C. Patil ji, Honorable Minister for Agriculture, Government of Karnataka,
Dr. M. Angamuttuji, IAS, Chairman APEDA, Department of Commerce, Government of India, our most respected Mysore's Maharaja, His Highness Yaduvirji, Shri Chris Gopal Krishnanji, former CEO Infosys and Chairman Axilo Ventures, Shri Sachin Sabnisji, our President, Lagu Udyog Bharati Karnataka, distinguished members, participants, invitees, exhibitors, who have put up the stalls, and dear friends from the media, a very good morning to all of you. On behalf of Lagu Udyog Bharati Karnataka and IMS Foundation and CSIR CFTRI Mysuru, I extend a very warm welcome to all the guests present here today to participate in the 3rd edition of TechBharat. We are happy to announce that LUB Karnataka Mysore Vibhag was formed early last year and is actively hosting programs on various verticals with specific reference to MSME sector. The grace of Goddess Chamundeshwari is bestowed on the triangular land of Mysuru, and this city thrives on the 3 vertices of rich culture, value-based education, and progressive industry. Culture, as you all know, is seen in abundance in all walks of the city in the form of Nada Habba Dasara, old palaces and temples, tasty food, music, art, exhibition, and many more. Isn't the world speaking of the grandeur of Mysore Palace and in awe of it? And today, Mysore becomes one of the biggest destinations for tourists across the globe. Education sector too is on the growth, expanding graph. Our main focus and highlight today is the agri and food sector that we are famously known for. Our country's pride R&D institutes, CFTRI and DFRL, are located at our Mysuru. As you are aware, Mysore has a very strong industrial presence since the last several decades, contributing to the economic growth of Karnataka. Being the royal and heritage city, Mysuru houses several industries such as pharmaceuticals, textiles, software development, food processing, and many units into tasty and nutritious food products, which is the need of the hour. Mysore has different agroclimatic conditions and soil types that enable its agriculture and allied sector. The district employs a major part of its cultivable land of net zone area for commercial cropping. The district has some of the big industry names like Automotive Axle Limited, Infosys, Bharat Earth Movers Limited, Karnataka Silk Industries. We are famous for our Mysore silk, TVS, Larsen and Toubro Limited, to name a few. That might have sent you down on a memory lane of two-wheelers like ST and Road King. We can never forget the contribution of Canray, the organization that has made Mysuru proud with its contribution in saving thousands of lives during COVID-19. It is indeed commendable as they did the noble task of saving numerous lives. Mysuru is a treasure trove for mineral resources. Mysore has also made itself an important center for manufacture of machine tools and the like of industry materials. With several higher educational institutions mushrooming, Mysuru provides the best of skilled human resources for various industrial verticals. In order to capitalize on the industrial strengths of Mysuru, a few industry leaders joined together and formed Lagu Udyog Bharati Karnataka's Mysore unit. In a few months from now, we should be able to have most of them in business from the heritage city as members of Mysuru Vibhag Lagu Udyog Bharati Karnataka.
The unit will further strive to improve industrial climate here by the way of capacity building, adoption and technology and upskilling MSMEs to the next level. We hope to empower many tribals and rural folk, support small farmers and thereby play a significant role in stopping migration of the rural folk to cities. Royal Mysore, the land which river Kaveri nourishes, from the chucks of the train to the airport expansion, from the busy corridors of the vibrant Mysore Devaraja's market to the sustainable business arena, where industry, education and culture thrives. Let Mysore make a beeline to flourish and progress. Not taking much time, I once again thank TechBharat's team for giving us an opportunity to host this event at Namma Mysuru. Dhanyavad. Thanks a lot, madam, for showcasing Mysore as the next investment destination. I now request the guests to kindly step on to light the lamp, please, and also offer flower tributes to Bharat Mata. Second camera ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 16 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ 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 ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ So we formally inaugurate the session. We would like to honor our guests present here. Can I request Sri Sachin Sabus, President Agri Tech A, to kindly honor our chief guest, Honorable Union Minister for State for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Sri Kailash Chaudhary ji, please. Can I request Mr. Narayana Prasna, General Secretary, Laghu Udyog Bharati, Karnataka, to kindly honor our chief guest, Sri B.C. Patil, Honorable Union Minister for Agriculture, Government of Karnataka. Can I request Sri Bojraj,
Honorary Secretary Laghu Udyog Bharati to kindly honor Dr. M. Angamuthu, IAS, Chairman, APIDA, Department of Commerce, Government of India. Can I request Chaya Nanjappa Ma'am, Vice President, Laghu Udyog Bharati, Karnataka, to kindly honor Dr. Sridevi Annapurna Singh, Director, CSIR, CFTRI, Mysore, please. I now call upon Mr. Mahesh Shenoy, President, Laghu Udyog Bharati, Mysore Vibhag, to kindly honor Shri Chris Gopalasar, former CEO, Infosys Technology and Chairman, Axelo Ventures. Thank you very much, sir. It's my pleasure now to call upon our chief guest, Shri B.C. Patil, Honorable Minister for Agriculture, Government of Karnataka, to kindly deliver the address, please. Before that, I request to kindly inaugurate the mobile processing unit of CSIR, CFTR through virtual platform. Yeah. CSIR CFTRI has designed and engineered a mobile processing unit enabling farm-grade operations for benefit of farming clusters. The unit will be able to support processing tomatoes, spices, and many other perishable commodities. As a new development, one more similar unit is being developed in Northeast region with the support of DST, TIF, TFAC, and NERMCA. I request Shri B.C. Patil to kindly address us, sir. Book release titled Three Technologies documented by CSIR CFTR. CSIR CFTRI has been a forerunner in popularizing some of the technologies for entrepreneurs and MSMEs. So far, the Institute has made 15 of the technologies free of cost, and 7 new technologies are being added to this list soon. So far, 60,000 downloads have been recorded in this portal, which is an indicator about its wide acceptance among entrepreneurs. लघु भारत लघु उद्योग भारत ಮತ್ತು CFTRI ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಕೈಲಾಸ್ ಚೌಧರಿ ಅವರೇ, ವಿಶ್ರಾಂತ CEO ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರವರೇ, ಅಪೇಡಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಅಂಗಮುತ್ತು ಅವರೇ,
CFTRI ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರೇ, ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಚಿನ್ ಸಬ್ನೀಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ, ಕೃಷಿ ನಾಶ ಆದರೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರೈತನನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥೀಮಿತನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಬೆಳೆಯವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ. We are seeing the farmer, we are giving seeds, fertilizers, chemicals, everything, and we are making him to grow the crops. But we are not seeing at the end what happens. That we have to see the end. The farmer should reach the consumer. ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಂಥ ರೈತ ತಾನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ his income can become double, his income can increase. That's what our Prime Minister Narendra Modi sees the dream. The farmer's income should be double by 2023. Unless we encourage the farmers to start their own startups and to start the processing industries, the farmer will not get the benefits. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯವರು ಈ ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ ಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ರೈತನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ. 2014ರಿಂದ 2018ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 50,000 ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9,300 ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ 474 ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಂದ ಈ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40,000ರಿಂದ 50,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇದುವರೆಗೆ 1,60,000ದಿಂದ 1,70,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೃಷಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಕ ಉಳಿದ್ರೆ ದೇಶ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಭಾಳ ನಾವು ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ agriculture, but now the importance has come to the agriculture. Now I can give one example in Sirsi, North Kerala. One farmer, Madhukeshwar Hegde, he started a jenu saganike, honey saganike start ಮಾಡಿದ್ರು. 10 years back he told me, 10 years back I didn't have a single NP. I started this jenu saganike. Now I am earning per year 2.5 crores per year. His income is there. In ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಾಗರಾಜನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರೈತನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವನಿಗೆ ಇರೋದು 1.5 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದ, ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ದುಡಿತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಒಂದು 40-50 ಸೈಟ್, ಒಂದು 30-50 ಸೈಟ್ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನು. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ದುಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎ ಶಫರ್ಡ್
per year he is earning 16 lakhs in 1.5 acres. That's how we have to start. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಉಪಕಸಬುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಕಿರು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ರೈತರನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ CFTRA ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 500 farmers in getting the technology from the CFTRA technology, and they all started their own business and they started this FAOs. They have started and they are number 1 in Karnataka now. They are earning very good amount. So the farmers ಇವತ್ತು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಇವತ್ತು ತಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತ ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪೇಡ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ, ನೀವು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾವೇರಿ ಯು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾವೇರಿ, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಮೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಗ್ industrialists to the Haveri and we'll do it. That's what we are all thinking, and that's what we have to do to uplift the farmers and to get more income, to earn their double, to make their income double. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ 4,000 ಅಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದಂಥ ಅವರ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಕೈಲಾಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಇನ್ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ 600 crores for 3 years from the central government, and Karnataka is identified as the lighthouse partner. Karnataka is identified as a lighthouse partner for this country. And in Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana, Aadhaar ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ Karnataka stood first. We got award for that. And we have started this crop survey by the farmers. Which helps the farmers to get MSP and crop insurance. Karnataka stood first, and the central government, Central Agriculture Ministry recognized Karnataka as the trend setter in doing the crop survey. We are doing our farmers, they themselves will go to the field, they will take a photograph, they will upload, and they will upload to the e-governance. So there will not be any mismatch of the crop. So the farmers cannot be cheat by the insurance company or other things. So that we are doing it. CFTRA especially, they are giving a wonderful training, and they extended their cooperation for Laghu Bharat Udyog for conducting this program. I am very much thankful to Madam Annapurna ji, Veena ji, and Laghu Bharat Udyog. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್.
much, sir, for the very, very comprehensive address indicating that there is a lot of scope for agri and food processing startups to be established in India, more so in Karnataka, as Karnataka is the hub for innovation and disruptive technologies. Now I call upon our guest of honor, Sri Chris Gopalakrishnan, former CEO Infosys Technologies and Chairman Axelo Ventures, to deliver the address, please. I would like to inform the audience that Sri Chris Gopalakrishnan is the chief architect of all our 3 editions of TechBharat. Give him a big hand. A very good morning to everyone. Sri Kailash Chaudhary ji, Sri B.C. Patel ji, Sri Yaduvur Wadiyar ji, Dr. M. Angamuthu, Dr. Sridevi Annapurna Singh, distinguished guests, friends. First of all, it's a privilege for me to be present here in Mysore for the 3rd edition of TechBharat 2022. I want to compliment IMS Foundation, Legu Udyog Bharati, for championing the cause of farmers, for bringing farmers together with business to think about farming as an entrepreneurial activity, use the term startup along with farming. I think it's a big transformation in how we see farming. I've been saying that farmer is the most courageous entrepreneur because sometimes they actually play with their life itself when they farm. So they actually play with their life itself. So compliments to Legu Udyog Bharati and IMS Foundation for bringing the focus to farming, agriculture products. And I'll come back to this in a while. I also want to compliment CFTRI for coming up with technologies and doing technology transfer to farmers to improve the value addition in the food products, to improve the productivity, to bring technology into farming. So to me, as we look to transform our agricultural sector, India is one of the largest producers of many agricultural products. Just now, we saw that India is the 2nd largest producer of wheat in the world, and the rest of the world is actually looking forward to India exporting its wheat, given the crisis that we have around the world. So we are one of the largest producers of agricultural products. We have the largest arable land in the world compared to the ratio of total land that we have. In order to improve the agricultural economy, the agricultural productivity, the life of our farmers, we need to look at one, scale. Farmers need to come together and form farmer cooperatives, farmer producer organizations, and we need to enable this. With scale, we can reduce the cost of inputs, we can share the cost of the machinery and all the inputs that are required. We can train them better. We can take
care of the output and look at value addition. So scale is important. Introduction of technology is very important, and technology is the driver for productivity, for innovation across all industries, and the same should be used in farming also, in terms of survey, in terms of using satellite imaging for looking at the crops, market linkages, looking at value addition. In every stage of agriculture, we can look at the direction of technology. Next, value addition. And in value addition, we need to look at how we can bring capital in order to look at value addition, how value addition can be created in the produce. And typically this value addition happens where the produce is harvested. So jobs are created in rural areas. And bringing the capital, there are two methods. One is, of course, looking at farming as a entrepreneurial startup activity and making startup capital, risk capital available to farmers. The difference between a debt and a risk capital is that debt you are expected to pay back. If you look at startup capital, the investor expects some of the startups to fail, so they are willing to write off if the venture is not successful. And this, I think, is very, very important to bring into farming. And the third is philanthropic capital. The capital required to buy equipment can be provided by philanthropy. I think it's something that I'm personally involved with, and I've seen the benefit of doing this. Last, farming must be seen as an export activity. We must make sure that our produce is world class. It should be exported all over the world. And the reason for saying this is, if we export our produce, we can increase the income for our farmers. The price that they get will be significantly more than in the domestic market. Of course, we need to balance between domestic requirements and domestic consumption with export requirements. I hope that this event here in Mysore will further bring new ideas, new innovations, new thoughts, new cooperation between industry and farmers. Bring more capital into farming and agriculture. And this event becomes a milestone in how we look at farming in the country. I thank you all for giving me this opportunity to share my thoughts. And last but not the least, I'm happy that this event is being held here in Mysore. One of the largest campuses of Infosys is here in Mysore, and we've always believed that Mysore is one of the most important investment destinations in the country. So thank you all very much. Thanks a lot, sir. Thanks a lot for this wonderful address. I hope the advice for young entrepreneurs to take up farming as a career option is taken up by them very seriously.
Can I now invite our guest of honor, Dr. M. Angamuthu, IAS, Chairman, APIDA, Department of Commerce, Government of India, to kindly deliver the address, please. Thank you. Honorable Shri Kailash Chaudhary, Honorable Shri V.C. Patel ji, Shri Krish Gopal ji, Shri Bedi Annapurna ji, and Shri Sachin Sakhish ji, and His Royal Highness Vidhu ji, and Shri Bojraj ji, and Shri Chaya Rajappa ji, and all the distinguished guests, panelists, and various institutions and startup representatives, those who are part and parcel of this framework, and all my students, friends from CFTRA and various parts of the country. First of all, my heartiest compliments and appreciation to WDO Bharati and IMS Foundation and the CFTRA campus, my CFTRA Mysore, for organizing this wonderful initiative. Because the context is very simple, which was already set and choreographed by none other than our Honorable Prime Minister from almost 2018 onwards. So what was the context? One is Atmanirbhar Bharat. The other context is be vocal for local, and local goes global. Again, another different type of context. Atmanirbhar Bharat and be vocal for local items, local product, local entrepreneurship, and take it to next level, that is global destinations, various global destinations. The another context is, since I am representing Government of India, Ministry of Commerce, these days Government of India, under the honorable and dynamic vision of Prime Minister, making district as an export hub. Previously, export means it was like a very specialized, more of a businessman-centric program. Not anyone, everyone can do. Those who are doing export, inka knowledge base is very different. So common man cannot do. Okay, common man cannot read and identify what is export. Nothing like that. The framework is set so nicely. These days, anyone can do export business. It's not so great and a tight thing that you can't do a business. So anyone can do export business. Anybody can be an exporter, including our farmers. Okay, including our farmers. They are the most important and they are the one who are doing everything for us. Farmers can become an exporter. And all of you, those who are part and parcel of this initiative, wherein we are discussing about startup ecosystem, incubation, incubatees. So all those things are coming up. Adult tinkering labs, incubation, there are plethora of projects. So all the startups can do export, and all the tech firm can support export, and all the technological institutions like CFPRA can give a backward linkage to all these startups and the tech firms to do more business, wherein Honorable Minister and Shri Krish ji, they spoke about two things: enhancing farmers' income. Whether it is a doubling or tripling, this will happen. Okay, enhancing farmers' income also vision of our Honorable Prime Minister. If you happen to see, we have the largest arable land in the world. We are the top producer of so many products. We are the top agriculture exporter. We are the top exporter in at least few segments, like I can vouch and say in cereal sector. In cereal sector especially rice, wheat, millets, maize, okay, and processed cereal product. We are the leader. We are contributing almost to the tune of 50% of global export.
50% is not a joke. If you happen to see in the cereal sector, there is a trade to the tune of almost 50 to 55 million metric tons of cereals is being traded. Out of that, India itself is trading around 35 million metric tons. Imagine that. 35 million metric tons we are doing it. And if you happen to see agri export scenario, last year in 2021, we have touched 51 billion. Okay, 51 billion again. We used to be nowhere in the scene, but now we have reached close to 8th to 9th position in agri export globally. Okay, global agri trade, we are close to 8th, 9th position, and we are a leader in few of the areas. But still, we have to do more in the days to come. Who will do? You all guys will do. All the startups, all the technological institutions like the CFTRA, all the young generation, you are the one who is going to create employment. What is important now is generation of employment, supporting farmers, hand-holding farmers to do better work in the days to come. How we can do? Say example, technology-driven platforms. You know, like the institution like the CFTRA, Inaugural, which you are organizing this type of events. The most critical linkage is basically, there is always a gap between institution and the various startup like all of you. There is a need to share, there is a need to do capacity building and knowledge sharing. Okay. What is important is capacity. हमको पता है हमारा agriculture product is so good, so nice. But दुनिया भर, outside people may not appreciate what is so good with us. We have to tell them, we have to teach them. Okay. Farmers knows they can do, they are producing best item. Say example, Mysuru Mallige. Mysuru Mallige is one of the finest GI product from this part of the country. Okay. There is so much of potential. But to export Mysuru Mallige, we have to have a standard operating procedure. We need to have a SOP. What kind of SOP we need? हमको पता है Mysuru Mallige is so good, but a person who is sitting in America and Europe, he may not appreciate what is Mysuru Mallige. First thing what we have to do, we have to promote branding. What is Mysuru Mallige? How good it is. First thing we have to do. Second thing, जो पेस्ट डिजीज का होता है, पेस्टिसाइड केमिकल्स वगैरह होता है, इसका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा. लेबोरेटरी टेस्ट, we have to do lab test, and we have to show that yes, this so and so product is free from pest, free from disease. That technological support you need it from any agriculture university, any central institution like the CFTRA, they have to support. Third, good package of practices for the farmers. So it's like a value chain maintenance. You need on the one hand supply chain, then on the other hand value chain. So both the things need to be merged. So this merging platform, what Agri Tech and what IMS Foundation and the CFTR are doing today, this is what the convergence platform. We need to have a convergence platform wherein we can bring all the knowledge, wherein we can bring all the ideas, all the technology-driven things, so that like our farmers, our stakeholders get a benefit out of this type of things. And in export, I just wanted to mention a few things. There is a concept called traceability. Okay, a person who is sitting in America or Europe, he wishes to know the product. See, any food is important. Whether it is for export, for local consumption, it is very important. We have to give a safe food. We have to give a quality food. We have to certify this is the best food, free from any disease, allergens, any chemicals. That it's a like a business ethics. We have to follow that. Okay, but to do that, we need a proper backward linkage with the institutions like CFTRA, agriculture universities and all. So we need to tie up that. Second linkage is what? We have to identify technology wherein a farmer is producing millets, say example ragi, okay, or finger millet, is producing somewhere in Mandia. That product has to be identified. A farmer, a Kishan ka naam kya hai? What is the name of the farmer? How much land he got? What is the package of practices he is following? Where he is sourcing all the product? Then by whom he is exporting to that particular country? Suppose I am consuming in Europe, I wanted to know all the details about that product. A package with a barcode, and all the backend information, I should know where the product is coming.
Okay, that much of traceability and technology linkages these days people are following. So there is a platform like blockchain technology. Okay, so BCT करके बोलता है BCT blockchain, you all guys know blockchain technology, artificial intelligence, and there is a qualitative and quantitative analysis of big data. See, these days business is data driven. You have to show some, if you want to show a product, you have to show some data, you have to show that, some QR code, you have to identify your product on, packing. See, that is so important. You have to show that, there is a barcode, concept of barcode, QR code, everything it has to be linked. Suppose if I scan in Europe, I should know where the product is coming. See, that technology will give us lot of competence to our business, especially to agri business. Agri business, you guys, startups and various the incubators, you guys should reach out to various farmers, FPOs, train them so that they will take care of this all the technology driven platforms. So that recently Government of India, our Honorable Minister, they all initiated this initiative. Krishi, see, there are good number of schemes like to support all the logistic things like a Krishi Udan, Kishan Rail and all those things. In addition to that, just last budget, there is an initiative called Krishi Drone. Okay, why it was introduced? People may think, why Krishi Drone? Drone like it was creating a lot of noise now, but we stopped it. But it is relevant in the field, especially in agriculture. Why? Because we use good amount of pesticides, fungicides to take care of our crops. We have to teach farmers. There is a concept of uniformity. There is a concept of pesticide residues. These days, every country wanted to know क्या pesticide residue आता है. If any pesticide residue comes, they will simply reject our product. They will say that we don't want your product. आपका product में there is a malathion, there is a endosulfan, so we don't want your product. Recently, I tell you, we send a few shipment of rice being sourced from Maharashtra to Dubai. Dubai, they found 21 number of pesticides. What they did, they not only stopped that particular consignment, they stopped literally all our product. Okay, saying that like आपका Indian agriculture product में ये product like पूरा mix आता है, residue आता है, you guys can't sell it. Like that we stop it. See, sometimes this residue management is so important. That's why schemes like like a Krishi Drone and all introduced. So my request to all the youngsters, young entrepreneurs, startups, please promote this type of technology. Okay, and please imbibe such type of technology wherein farmers will get a good benefit. And engage FPOs, engage farmer producer organization. Again, this is another beautiful concept by our Honorable Prime Minister, bringing FPOs under a single platform. More than 10,000 FPOs are formed. APEDA trained around 3,500 number of FPOs to do export business. And my intent to be here at part of Inaugural Bharati and IMS is, we from APEDA side, we wanted to do capacity building, advocacy, knowledge sharing with all the startup entrepreneurs, FPOs, and all the whoever are industrial platform, industrial interface के लिए whatever support from APEDA side we will provide. Okay, I request Inaugural Bharati, please form a strategy for entire country के लिए, whatever at least target some few hundred, few thousand number of FPOs, few thousand number of industrial entrepreneurs, young entrepreneurs, entrepreneurship and all, so that APEDA will join with you and organize a good quality capacity building program so that we will reach out to them. That is one thing. Second, do something for farmers also. First, identify people, identify institutions. Again, we will support for that also, for capacity building and all. Third, after capacity building, identify product. Which product? No need to identify 100 product. Identify some 5 product, 10 product. That 10 product ke liye we will focus. Identify, say example, from South Karnataka, these are all the product we can export. So specific items ke upar mein we will do capacity building, we will bring exporters, we will organize international buyer seller meet, we will send your product to outside. See, let me be honest with you again. In 5 years back, APEDA used to do business with 175 number of countries. Now we are doing business with 205 number of countries. 205 number of countries, almost around 220 plus number of countries in the world. 205 countries, हमारा agriculture product जा रहा है. It's going to 205 number of countries. See, sky is the limit. We have a good support system.
Our infrastructure ministries like port, railways, shipping and all so good, and we have an excellent infrastructure with the name of Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana. This is again a very beautiful concept. It is coming up so well. You guys do some good business with that also. And all our Indian missions, they are very active. They are always supportive. So please identify good quality entrepreneurs, farmers who are willing to do business, farmers who are willing to do agri-business and trade. APEDA will support, and once again my best wishes and compliments to Agri Tech A, CFTRI and the IMS Foundation for this wonderful initiative. We are with you, and after deliberation of these programs, whatever recommendation comes, anything related with the Ministry of Commerce, anything related with APEDA, we will do further hand-holding and further support. Thank you very much. Thanks a lot, sir, for showcasing APEDA and stating that agri and food processing enterprise should value add their products by using technology and seriously look at exporting our product globally, of course, with a caveat, quality is embedded in the product. Can I now invite our chief guest, Honorable Union Minister for State for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Kailash Chaudhary ji, to kindly address the keynote address. And before that, sir, we would like to release the product. This is a millet beverage designed and developed by CSIR, CFTRI in Mysore. CSIR, CFTRI has been commercialized earlier minimum processed vegetables with many industries, including big basket. Today, a new technology has an outcome of the fast-track commercialization project funded by CSIR on millet beverage. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी आवाज कम है। भारत माता की आवाज तो ठेठ पाकिस्तान तक जानी चाहिए। जाएगी ना? भारत माता की, भारत माता की। इस बार जरूर दें। आज इस 3 दिवसीय जो सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, इस 3 दिवसीय सेमिनार के उस उद्घाटन के अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित हमारे कर्नाटक सरकार में कृषि मंत्री आदरणीय BC पाटिल साहब और हमारे मध्य उपस्थित हमारे लघु उद्योग भारती के प्रेसिडेंट आदरणीय सचिन जी, बस सबनीश जी, और हमारे मध्य उपस्थित हमारे यहाँ के महाराजा जी मैसूर के, जो हमारे जवाई राजा हैं, हमारे जवाई राजा जी कभी राजस्थान में इनकी शादी हुई है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो जवाई राजा जी कहते हैं उनको, तो ऐसे हमारे महाराजा जी यदुवीर सिंह जी और हमारे लघु उद्योग भारती के ही उपस्थित छाया जी और लघु उद्योग भारती के हमारे भोजराज जी, जो हमारे आज लगातार संपर्क में भी थे, और लघु उद्योग भारती के उपस्थित यहाँ पर हमारे जनरल सेक्रेटरी जी नारायण प्रसन्ना जी, और हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय हमारे लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारीगण
और यहाँ पर उपस्थित सीईओ हमारे श्री कृष्ण गोपाल जी कृष्ण जी, इन्फोसिस, और हमारे सभी मंच पर बैठे अतिथिगण, जिसमें अंगनुत्व को चेयरमैन अपेडा भी हैं, उपस्थित हैं, और सभी मंच पर बैठे अतिथिगण और सामने विराजमान सभी हमारे आईसीआर के और लघु उद्योग भारती के और सभी उपस्थित CFTIRI के पदाधिकारीगण और सभी भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और मैसूर की इस धरती पर ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं इस धरती के ऊपर खड़ा हूँ और हम सभी यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की चिंता कर रहे हैं जो हमारे धरती पुत्र हैं, किसान हैं और खेती करने वाले, और जो देश के अन्न को अन्नदाता के रूप में उनको हम पहचानते हैं। और हम सभी लगभग यहाँ पर उपस्थित हैं, किसान परिवार के ही यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं इस अवसर पर विशेषकर लघु उद्योग भारती को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर लघु उद्योग भारती भी है और हमारे ICR भी है, CFTRI भी ऊपर यहाँ पर है, और लगातार पिछले कई दिनों से ये प्रयास हो रहे हैं कि हम आने वाले कल में हमारे देश के किसानों के लिए कुछ करें। और लघु उद्योग भारती एक ऐसा संगठन है जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है, जिनका विचार जो है वो देश धर्म पहले है। आज देश धर्म को और देश को आगे बढ़ाने की कल्पना को लेकर और राष्ट्रवादी विचार को लेकर ये संगठन की जब स्थापना की गई थी, और उसके बाद लगातार लघु उद्योग भारती ने इस देश के अंदर जिस तरह से छोटे छोटे उद्योग हैं और जो उनको आगे बढ़ाने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में लघु उद्योग भारती का बहुत बड़ा संगठन है जो हर छोटे या शहर के तक वो पहुंच चुका है। और उसी के निमित्त आज ये लघु उद्योग भारती के और सभी के प्रयासों से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये मैं आपसे आग्रह भी करूँगा कि आने वाले 3 दिन तक जो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और अलग अलग सत्र के अंदर अलग अलग जो सेशन होंगे, उन सेशनों के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ जानकारी भी दी। आज एक्सपोर्ट के संबंध में भी आपको जानकारी मिली कि एक्सपोर्ट के लिए हमें कौन सी क्वालिटी के ऊपर कितना ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन सा रिड्यूस होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें आने वाले समय में पेश करनी पड़ेगी। और आज वो समय है कि एक समय था जिस समय देश के अंदर कृषि के अंदर हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे, हम इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन आज देश के अंदर हम उस स्थान पर खड़े हैं किसानों की मेहनत से, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके रिसर्च से, और नई टेक्नोलॉजी हो या जिस तरह से काम किया गया। आज उत्पादन की दृष्टि में हम खाद्यान्न के अंदर सरप्लस है। ये सब किसानों की और उनकी सबकी मेहनत की वजह से हम आज सरप्लस हुए। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि हम नई तकनीकी को अपनाते हुए नई टेक्नोलॉजी का हम किस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारे किसान को उसका टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिले। और सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कृषि के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष ध्यान दिया गया। 2013 से पहले मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा
कृषि का बजट जो था वो भी कम था। कृषि का टोटल बजट था वो लगभग 23,000 के आसपास था, 23,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़ रुपीस के आसपास था। और आज जो बजट है वो बजट 1,32,000 करोड़ है। 1,32,000 करोड़, यानी कि कितने टाइम्स बढ़ गया? 6 टाइम्स वृद्धि हुई है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि जो 23,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट था वो 1,32,000 करोड़ रुपए बजट गया। तो इसके पीछे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमें किसानों की इनकम डबल करना है, तो उसके लिए किसानों को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सिर्फ किसान 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 कहने से काम नहीं चलेगा, किसान के लिए कुछ करने की आवश्यकता होगी। और इसके लिए कृषि के अंदर बजट को बढ़ाया गया और उसमें भी किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट भी देने का काम किया गया, जिसके अंदर किसान सम्मान निधि के तौर पर प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं, जिसमें वही रकम 65,000 करोड़ रुपए होते हैं। जहाँ एक समय था जहाँ सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए बजट था, और आज डायरेक्ट किसान के अकाउंट के अंदर 65,000 रुपीज है, वो डायरेक्ट उसके खाते में जा रहे हैं, करोड़ रुपीस। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि के लिए भारत सरकार कितने प्रयास कर रही है कि किसानों के लिए, हमारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी भी मिले, किसानों को सपोर्ट भी मिले। और आज मुझे बताते हुए और देखते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिस सभागार के अंदर, इस परिसर के अंदर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे युवा साथी इसके प्रति जागरूक है। कृषि को एक समय था जब देश का युवा कृषि को छोड़कर जाना चाह रहा था, यूथ कृषि को पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में मैं युवाओं के अंदर, मेरे युवा भाइयों को भी देख रहा हूँ, मेरी बहनों की संख्या भी देख रहा हूँ कि उनके कृषि के प्रति उनको बात सुनना पसंद कर रहे हैं, कृषि के अंदर जाना चाहते हैं। तो इस सारी दृष्टि को देखा जाए तो आज मुझे लगता है कि कृषि के अंदर अगर बात करें तो आप और हम सब जानते हैं कि कृषि के अंदर पहले क्या होता था। मैं आपको जो दुनिया में जो हम देखते हैं, मैं भी जब छोटा था तब भी देखता था, आपने भी देखा होगा कि कृषि के अंदर आज कभी किसान का नाम लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि एक गांव में, कहानी भी लिखी जाती है तो उसमें लिखा जाता है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। ये नहीं लिखा जाता कि एक गांव में एक अमीर किसान रहता था। लेकिन किसी सेठ के बारे में लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है एक गांव में एक धनाढ़ सेठ रहता था, उसके गरीब सेठ नहीं लिखा जाता। तो एक मानसिकता ऐसी बनी कि किसान का मतलब गरीब ही होगा। और कोई मैगजीन में भी हम देखते हैं तो, या कहीं पर मीडिया के अंदर भी चित्र देखते हैं तो किसान का चेहरा दिखाते हैं तो फटे हुए कपड़े, आकाश की ओर देखता हुआ, जमीन फटी हुई, ऐसा चित्र बार बार देखता है कोई मेरा युवा साथी। तो वो क्या सोचता है कि अगर मैंने भी कृषि की, खेती की, तो भविष्य में इस फोटो वाले चित्र के किसान की जो दुर्गति हुई वैसी मेरी भी होगी। ये सोचकर उसने कृषि को छोड़कर और वो नौकरी की तलाश में गया। नौकरी करना उसने पसंद किया। लेकिन अब वो समय आ चुका है। मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास प्रारंभ किए और नई टेक्नोलॉजी से लेकर सारी वो व्यवस्था की जा रही है जिससे कि किसान के, हमारे युवा आने वाले समय में कृषि की ओर जाएंगे और कृषि के अंदर इनकम डबल ही नहीं, मैं आपको दावे के साथ में कहता हूँ कि ये जो टीम सामने बैठी है मेरे युवा साथी, वो अगर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अगर खेती करते हैं तो आने वाले समय के अंदर मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ कि डबल ही नहीं, 5 गुना और 10 गुना भी इनकम हम कर सकते हैं। आज हम कोई भी उत्पादन होता है, फसल जो भी हमारी होती है, उस फसल को हम सीधा मंडी के अंदर देना चाहते हैं, मंडी में देता है किसान। लेकिन अगर उसी फसल की हम वैल्यू एडिशन करके और अपना ब्रांड लगाकर और अपनी ब्रांड के साथ में अगर हम उसको अच्छी क्वालिटी का बीज हो, सीड भी हमारी उच्च गुणवत्ता का हो,
उसके अंदर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो पैरामीटर्स जो पूरा करने वाले हो, उन सबको अपने ब्रांडिंग के साथ में अगर हम बेचते हैं तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आपके आने वाले समय के अंदर जो अभी पैसा मिल रहा है उससे कई गुना अधिक मिलेगा। अभी एक्सपोर्ट के बारे में कहा गया, एक्सपोर्ट का उत्पादन लगातार हमारे बढ़ रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है एक्सपोर्ट के अंदर। ये सभी जो कमाल है वो हमारे जो स्टार्टअप हैं, नए युवा साथी हैं और जो हमारे किसान हैं, उन सब के प्रयासों से ये संभव हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे सभी युवा साथी और स्टार्टअप्स जो यहाँ पर हैं उनसे भी कि कृषि के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं हैं और ऐसी ऐसी योजना जिनकी हम सबको जानकारी होनी चाहिए। बात यहाँ पर मैं खड़ा होकर मंच पे कह देता हूँ कि हम इनकम डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, लेकिन युवाओं को आज आवश्यकता है अगर तो उसके लिए उनको फंड कैसे अवेलेबल हो, जैसा पहले कहा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी व्यवस्था की कि आज जैसे कि एक अगर कोई यहाँ पर जैसे कोई भी उत्पादन होता है, अगर नारियल है, जो नारियल होता है उस नारियल का अगर किसान डायरेक्ट अगर बेचता है तो उसको कितना रुपए मिलता है? 10 रुपए मिलते होंगे या 15 रुपए या 12 रुपए मिल जाते होंगे नारियल के। लेकिन वही अगर किसान अपने खुद के वहाँ पर खेत में प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर और उसको अगर वो नारियल को एक बढ़िया अच्छी सी बोतल के अंदर पैक करके खुद के ब्रांड के साथ में बेचे और वो भी एक्सपोर्ट करे तो 10 गुना उसकी रेट हो जाती है। लेकिन किसान सिर्फ अपना उत्पादन करता है और वो बेच देता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर कॉफ़ी होती है, लेकिन उस कॉफ़ी को अगर हम अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं स्वयं और किसान खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अगर वो खुद अपना लगाकर बेचता है तो उसकी रेट उसको अधिक मिलती है कि नहीं मिलती है। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर बैठे भाई साहब और हम कि हमारी कॉफ़ी है जो यहाँ पर जो बेचते हैं तो उसकी रेट है सिर्फ 60 रुपये, लगभग 600-700 रुपये, और वही एक्सपोर्ट हो जाती है। वो एक्सपोर्ट जब दूसरे देशों में जाती है तो लगभग 6000 रुपये का बताया। तो ये चीज़ है, तो उसके लिए उन्होंने ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने जिन्होंने भी एक काम किया यहाँ से जाया, लेकिन किसान के घर में कितना मिला? किसान को उतना पैसा नहीं मिला, लेकिन बीच में जिन्होंने भी प्रोसेसिंग करके उसको बेचा उसको रेट मिली। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य ये है कि हमारे किसान खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाए और खुद की ब्रांडिंग करे, और इसके लिए लघु उद्योग भारती बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लघु उद्योग भारती का उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो वो यही है कि हमारे छोटे छोटे उद्योग कुटीर उद्योग गांव के अंदर लगे, जिससे कि उनके किसानों को, गांव के किसान अपने पैरों पर और किसान खड़े हो सके। और इसके लिए अब इस भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसमें एफपीओ बनाए जा रहे हैं। एक छोटा किसान है वो प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा सकता, छोटा किसान है वो, उसके पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो यूनिट लगा ले। लेकिन अगर हम 300 किसान अगर इकट्ठा होकर और या 300 से अधिक अगर हम किसान इकट्ठे हो जाएं और अपना एक एफपीओ बनाकर अगर खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो ये सब संभव है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? इतनी बड़ी अगर प्रोसेसिंग यूनिट अगर लगाना चाहता है तो उसके लिए भारत सरकार एफपीओ को सपोर्ट भी करता है। उसके अंदर लगभग 33 लाख रुपए 33,000 लाख करोड़ रुपीज उनको अवेलेबल करवाते हैं, और उसके साथ ही उनको एफपीओ को 33 लाख रुपए तो देते ही हैं, लेकिन उसके बाद में अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग की अगर यूनिट लगाते हैं तो उसके लिए जितना पैसा चाहिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की भी आवश्यकता है, तो वो भी पैसा भारत सरकार की ओर से एफपीओ को दिया जाता है ताकि वो अपनी खुद की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग की यूनिट लगा सके। ये काम भारत सरकार करती है। एफपीओ बनाने का 10,000 एफपीओ का जिक्र भी किया पहले, 10,000 एफपीओ बने, और उसके साथ में एफपीओ को सपोर्ट भी किया जा रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग हम सबको करना चाहिए। मुझे बताते हुए थोड़ा इस बात का ये चीज़ भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज से लगभग 1.5 साल पहले जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया था
कृषि के अंदर टोटल 1.5 लाख करोड़ रुपए, और जिसमें फिशरीज के लिए और दूसरे जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए वो अलग है। लेकिन कृषि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो प्रावधान किया, लेकिन अभी तक टोटल जो खर्च हुआ है वो लगभग 6,000 करोड़ रुपए हुए खर्च, क्योंकि किसानों का उसके प्रति अभी जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, आप अगर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, या अगर आप कोई अपने वहाँ पर प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग की यूनिट लगाना चाहते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, या सॉर्टिंग ग्रेडिंग के लिए, तो भारत सरकार की ओर से प्रत्येक किसान को 2 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। 2 करोड़ रुपए 3% ब्याज की छूट के साथ, 3% ब्याज की छूट होगी, और किसी प्रकार का कोई मोर्गेज देना नहीं पड़ेगा। बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के जमीन को गिरवी रखे आपको 2 करोड़ रुपए प्रत्येक किसान को देने की